Dr. Akram Ahmed sir, respected Dr. Professor Manju Pandey ma'am, Director Institute of Pharmacy, respected faculties and my dear friends. Today, we all have gathered here for webinar on the topic Pathways to Become a Registered Pharmacist in Australia and other countries, and also a career guidance. So, Sir is a PhD graduate from the Faculty of Medicine and Health, the University of Sydney, Australia. Currently, he is working as Burns Researcher and Researcher Manager at the Children's Hospital at Westmead, Sydney. Previously, he was a pharmacy academic and has taught pharmacy practice and clinical pharmacy at UCSI University, Malaysia. His research program covers areas related to medication, use optimization, patient preference, drug safety, pharmaceutical education, pharmaceutical policy, affordability of medicine, quality use of medicines, and community and health economics. He has active research collaborations and linkage in over 10 countries, including in world's leading universities such as University of Sydney, Australia, Boston University, USA, University of Huddersfield, UK, and many more. He has published over 110 papers, book chapters, conference papers, including in high-impact journals such as Lancet, the Lancet Infectious Diseases. In his credit a total of 110 publications with a total of 200 plus impact factor points, 2200 plus citations, H index 25, and many more. Sir is the recipient of prestigious Best Promising Research Award from the UCSI University in 2016 with a prize money of RM 10,000. He is a founder and CEO of Academically. Academically was founded with a single goal in mind. The goal was to help qualified healthcare professionals across the globe. Sir is also the editor-in-chief of Journal of Pharmacy Practice and Community Medicine. So, I would like to invite Sir to guide us further. Sir? Yeah, Akram sir, are you there? I'm sorry, wait for a few more minutes. I think he's facing some technical issues. So he's here, but he's facing some technical issues. I'll just check with him. Hi, Amin. Hi, sir. You can start, sir. Arya has explained each and everything, and she has handed over to you. You can start now. Okay. Yeah. So are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. We can see. So hi everyone, my name is Dr. Akram Ahmed. So I think they already explained me about myself,
So today we are going to discuss about if you completed your pharmacy degree, so how you can migrate, how you can start working in Australia and New Zealand, these two countries. So what are the steps you need to take in order to practice in these countries? So I will explain you each and everything. So if you have any questions, please do ask me at the end of this webinar. Or you also can, you can type your questions so I can read your questions and I can give the answer as well. So academically, AI basically a company, and we provide courses for all the healthcare professionals like medical doctor, pharmacists, nurses, lab technicians, physiotherapists, or dentists, or veterinary doctors. So anyone is did a healthcare degree now want to migrate to abroad. So we provide courses. We provide basically the assistance to you. So you in migrate, whether it is Australia, New Zealand, US, Canada, UK. But in this webinar, I'm going to discuss about the Australia and New Zealand. Okay, but if you want other countries also, you can have a look on our website. So we basically provide end-to-end the assistance for the healthcare professionals to migrate to Australia. So my name is Dr. Akram. As I told you, I have around 10 years teaching experience in India, in Malaysia. Earlier, I worked around 4 years in Malaysia. In last 6 years, I'm in Australia. So I'm one of the pharmacy lecturer at the University of Sydney. And I completed my PhD from there. And I'm also the founder of Academically. So I have around 11 years experience in teaching in different countries. So I can say I have basically very familiarity from India and Malaysia, in Australia. So in these three countries I work, but generally I make content on YouTube. So encourage the pharmacy students so they can work in abroad. So I always make videos if you want to work in any other country apart from Australia, New Zealand. So you can have those channel. So here is the there's a basically if you want to work in Australia, so you need to write the exam called CAPS exam, KAPS, Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. So these are some of the faculties for this course. So academically, basically provide the two type of services. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we provide two services. One is if you want to study in abroad. For example, you want to do your master degree in Australia, New Zealand, or any other country. So we provide the assistance to you so you can get the admission done easily and you can migrate there. And another one. Sir, you are on mute. Please unmute yourself. Now I'm audible? Yes, sir. Okay, so basically academically provide two services. First, the study abroad, and we also provide a registration, pharmacist registration in abroad. Australia, New Zealand, Gulf countries, even Canada, US, UK, wherever you want to work as a pharmacist, we provide the assistance to you. So we basically, if you want to work in any country, so you need to pass a exam. For each country have their own exam. So if you can pass this exam in India itself, then easily you can migrate. So in case of Australia and New Zealand, you need to write this KAPS exam. Sir, again you are muted. So you can basically provide a registration in Australia, in New Zealand, and other countries as well. So if you want to work as a pharmacist, so you can work as a retail pharmacist or a hospital pharmacist if you want to migrate to Australia. So if you want to work in retail pharmacy, so the first step you need to complete is called initial skill assessment. Means you have to show your degree and your transcript. You completed your degree, Bachelor of Pharmacy or Master of Pharmacy or PharmD, Doctor of Pharmacy, or maybe if you are a PhD holder also. In all these, you have to just provide your degree and your transcript and they will check. And plus, your registration is very important. You must be a registered pharmacist in the home country.
So first step is skill assessment. They will just check basically the document evaluation. We can say first step. Then you will try this KAPS exam, and academically will provide you the coaching for this exam, so you can easily pass this exam in your home country in India itself. Okay, and then also you need to pass an English test. We will also provide you the coaching for English test. So these three steps you need to complete in order to migrate to Australia and New Zealand, and academically will help you to complete all these steps. So easily you can complete and you can migrate to Australia. And same step for hospital pharmacist. So basically, if you pass the exam, CAPS exam, so you can work in retail pharmacy or hospital pharmacy. Both job basically have the same job description. So you can work in hospital pharmacy or you can work in retail pharmacy. Also, it's up to you wherever you want to work. But someone did a bachelor degree plus they are working in any industry, any pharmaceutical industry, manufacturing unit if they are working, so they can migrate as an industrial pharmacist. Sir, you have been muted. So in order, if you want to migrate as an industrial pharmacist, you need 1 year work experience minimum. Okay, and if you are want to work as a pharmacy technician, so if you did your diploma in pharmacy or bachelor of pharmacy and you want to work as a technician, still you can work. Okay, but if you want to work as a pharmacist, so no need to have any work experience. Without work experience, you are a fresher, B.Pharm, you can migrate to Australia and work as a pharmacist after passing the exam. But 90% jobs in retail pharmacy or hospital pharmacy, so most likely the highly recommended to write the CAPS exam, and it is very, very easy exam to pass. And once you pass the exam, then easily you can migrate to Australia. And next is the industrial pharmacy technician also. And if you are a university lecturer, if you did your Master of Pharmacy or PhD, and now you want to work as a pharmacy teacher in Australia, you also can migrate as a university lecturer. But in Australia, the only 8 pharmacy colleges here, so jobs for lecture is very, very difficult. And yes, you can come as a lecturer, but you can work as a pharmacist. Again, you need to write the exam. So registration is very, very important. It's not just to work as a lecturer. Also, if you want to work in hospital or retail pharmacy, also you can work. So as I told you, these are the 3 steps you need to complete in order to work in Australia and New Zealand. So first step, initial skill assessment, you have to done. We will do your assessment. Then your CAPS exam you need to write, then English exam, all these will complete. So what is the difference between in Australia and New Zealand? So if you want to work in New Zealand, there's a need 1 year work experience is mandatory. But if you want to work in Australia, so there is no need to have any work experience. Like as a fresher, you can migrate to Australia. But if you want to work in New Zealand, so 1 year work experience is mandatory in the hospital pharmacy or in the retail pharmacy. Okay. And another that if you want to write exam, so for Australia, it is an unlimited attempt you can take. But for New Zealand, only 2 attempts you can take. If you fail in Australia, so more in New Zealand, so very difficult to sit in 3rd time. But in Australian case, you can write as many times. But since if you join academically, you will pass in your first attempt because we have a high track record. About 93% students pass in their first attempt. So first step, you have to register yourself with the Australian Pharmacy Council. So in this step, you need to provide your degree, your transcript, pharmacist registration, your passport, national ID like our Aadhaar card, or if you have a driving license also, and then birth certificate and passport size photograph.
So these are the documents required if you want to do this statistical assessment, and you need to pay the fees 1310 Australian dollar. And next step called CAPS exam. So knowledge assessment of pharmaceutical science. This is very easy exam. Anyone can pass, and this is a you need to pay the fees 2230 to the Australian government. So this CAPS exam basically, first of all, there is no negative marking, okay, and 50% only you need to score. So there is 100 questions. They will give you MCQ based 100 questions, and you need to score 50% and no negative marking. So very easy to pass this exam, okay. But most likely they will ask for these 4 domains: pharmaceutics and pharmacotherapy, in pharmaceutical chemistry, and then pharmacology and physiology. So these are the 4 domains they will ask the questions, okay. And then you will receive an outcome once you sit in the exam. So there is 8 centers in India currently. You can give the exam, like Noida and New Delhi, and we have Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad. There are so many centers is there in India. So these are the news from Pharma Tutor. I think some of you already know about the Pharmaceutical India. It's a very famous portal. So they just published one article about us. So our 93% student passed in their first attempt with the help of academically. Okay, so most likely you can attend this exam. You can pass in your first attempt, and after that you also need to pass this English test. So English test you can give the like IELTS or OET, PTE or TOEFL. But PTE is very easy as compared to others. So if your score is 6 in IELTS, so you can score 7 in PTE. Or if your score 7 in IELTS, you can score 8 in PTE. So very easy exam as compared to others. So highly recommended to go for PTE. So we will also provide you the coaching to pass this exam. So no need to worry. Then if you want to migrate as an industrial pharmacist, then you have to go for skill assessment, step 1. Step 2, PTE exam. Step 3 is EOI plus visa file. All these are the steps. There is no need to write any pharmacy exam, okay, for industrial pharmacist, as I mentioned earlier as well. But if you want to work as a pharmacy technician, again, no need to write any exam. But you must have a working experience as a technician. So if you are a degree holder, diploma, and you are working as a technician, you can apply for the technician as well. And once you complete these 3 steps, like skill assessment plus CAPS exam plus English test, now you have 2 options. The first options, you can sit in India, you can find a job in Australia, and company will sponsor your visa. Then you have to come to Australia to work as a pharmacist. Okay, academically will also help you how you can find this kind of jobs in India. And secondly, you can apply your own visa, permanent visa, PR visa. You can apply, and you can migrate to Australia with your family. With family means your husband or wife, or you have kids. Everyone can migrate to Australia. So most likely like 491 visa, 190, these are the permanent visa you can apply. And these are the work visa, basically you are. So these are the 5 visa you are eligible to get once you pass 3 steps. So most of the students ask me one doubt that do I need a sponsor to get the visa? So answer is no need to have any sponsor. Government will sponsor your visa. So if you can read here, they clearly mention this is regional sponsored visa. Government will sponsor because there is a high demand. Pharmacist is not available in the rural areas. So government is calling from other countries, please come to in my state and work here. So they are giving the visa. So once you complete these 3 steps, the first step you have to work as a pharmacy intern pharmacist. And then once you complete the internship 12 months, then you can work as a community pharmacist or retail pharmacist or hospital pharmacist. You can work. And later on, you also can work as a consultant pharmacist or clinical pharmacist as well.
The salary most likely you will get around 80 to 120,000 Australian dollar yearly. So if I convert you into the Indian rupees, it's most likely 3 to 5 lakh per month in Indian rupees. Okay, and total time will take around 6 months to complete all this process. Okay, so they are our Google review. They are our students. They pass the exam. The Femi and Monica, Ishita. There's so many. You can go have a look on our Google. So if you want to enroll or if you have any questions, so you can ask us here, Amin and Sadiq as well, or you ask writers on this email. So now I am happy to take your questions. If you have any questions, so please ask now. Yes, guys, any question? Yes, sir, I have a question. Yes, please. Yes, One sir. by one. One by one. Yes, please. Assalamu alaikum, So sir. what? Awesome. Sir, Question. I have question. Sir, I have question. आपने कहा है कि we have 90% success rate academically आई sir. In first 93%. attempt. 93%. 93%. Yes, sir. Ah. Like someone in first attempt not secure, like maybe he or she will be fail. Then he or she will pay fees again or Yes, government fees you need to pay again, but not for the academically. We provide the coaching until you pass the exam. So what is the And, government sir- fees over there? I already mentioned that 2230 Australian dollar. सही है sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, actually I missed the starting part. Manish, please one by one. Manish, yes. Yes, sir. I actually I missed the starting part. Could you please explain again? What is the total cost? You It can will go cover in our for all YouTube the channel. courses? It is live. You can watch as many times. So first step is skill assessment. You need to pay 1310. Then you need to write the exam. You need to pay 2230 Australian dollar. So around 3,500 for total you need to pay. Okay, sir. Thank you. Okay. Next, please. And please, there is a feedback form you can fill. And after that, also, if you have any questions, if you cannot ask here, so you can ask in the form, and our team will get back to you soon. Yes, next, please. सर कैप्स एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट है? Yes, ऐसे तो कोई एज लिमिट नहीं होती एग्जाम की, मगर फॉर वीजा पर्पस देयर इज एज लिमिट. तो योर एज मस्ट बी बिलो 45 years. सर एक क्वेश्चन और था कि 45 के प्लस के बाद में कोई व्यक्ति स्किल असेसमेंट करवाकर पीटी एग्जाम दे करके स्पॉन्सरशिप लेकर के ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकता है? यस, अगर कोई इफ यू हैव एनी स्पॉन्सरशिप, अगर आपने 45 प्लस आपकी एज हो गई है और आपने एग्जाम पास कर लिया, आपको कोई जॉब मिल जाती है तो अभी भी आप आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में. वर्क वीजा में कोई ऐसी एज लिमिट नहीं होती है. मगर परमानेंट वीजा क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया आपको सिटीजनशिप दे रहा है, राइट? तो वो सिटीजनशिप क्यों देगा? आप किसी की एज अगर 60 ईयर की हो गई फॉर एग्जाम्पल, वो तो खुद ही रिटायर्ड हो गया, तो गवर्नमेंट पे उल्टा वो बर्डन बन जाएगा. गवर्नमेंट को इससे कुछ फायदा नहीं होगा उसको बुलाने के लिए, राइट? तो इसीलिए वो कंडीशन है. पर अगर आप वर्क वीजा के चाहते हैं तो आप आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर क्वेश्चन ये था कि जो एकेडमी के लिए आई है सर, इसकी ना अगर हम बात करें सर, अगर एक पाकिस्तान में बंदा है या इंडिया में बंदा है पर मंथ अगर लाइक 40,000 भी कमा रहा है सर, वो अफोर्ड कैसे करेगा फीस और ये चीजें? तो भाई आप क्यों आ रहे हो? मत आओ, वहीं पर रहो. वी आर नॉट फोर्सिंग यू. इफ यू कैन नॉट अफोर्ड यू कैन नॉट कम, यू नो. अगर इफ यू वांट टू अर्न 5 लाख इंडियन रुपीस एंड इफ यू कैन कैलकुलेट in 1 year how much you are going to earn, you know, so what we can do in this. गवर्नमेंट की जो फीस है वो हम थोड़ी नहीं पे करेंगे, आपको पे करनी पड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली यहाँ पर जो सैलरी होती है पर आवर की बेस पे होती है, राइट?
तो इवन Yes, sir. आप यहाँ आओगे तो आपकी खुद की सैलरी $40 पर आवर होती है, $40 से $50 पर आवर। और यहाँ पर 8 घंटे काम करना होता है। अगर 15 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा काम किया तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर क्या है कि लोग ही नहीं है, इसलिए तो लोग दूसरी जगह से बुला रहे हैं आपको। 2 लाख वीजा वो ईयरली देते हैं, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं जो भी लगा रहे हैं जस्ट कि ये तो 1-2 महीने के ही हैं। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से बच्चे जो आते हैं वो $80,000 या $1 लाख लगाते हैं। $1 लाख, यानी कि मैं कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज में हो जाएंगे 60 लाख रुपीज लगा के बच्चे आते हैं। हरियाणा पंजाब के यहाँ पर लाखों बच्चे आते हैं। हर साल 30,000 बच्चे आते हैं यहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान, इंडिया से बता रहा हूँ, पाकिस्तानी में पता नहीं कितने आते हैं, जो यहाँ पे स्टडी करने आते हैं। और वो उनको फिर पीआर नहीं मिलती, ना ही जॉब मिलती है, वो फिर हमको ज्वाइन करते हैं। हमारे पास 50% बच्चे ऐसे ही हैं जो इंडिया में ऑलरेडी हैं, जो यहाँ स्टडी करना है तो अभी वो नहीं कर पाए। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो हमारी कंपनी, हमारा एक टाई अप है, उसके लिए हम लोन करा देते हैं। अगर आप उनको लोन कर सकते हो, आप उनको 12 महीने में आप ईएमआई पे आप पे कर सकते हो। ये भी ऑप्शन है हमारे पास। जो इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए ऑप्शन है ये ओनली। Yes, sir. और सर सेकेंडली ये कि रिलेटेड टू लाइक स्कॉलरशिप, आप ये भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। हमारा काम है भाई रजिस्ट्रेशन कराना। अच्छा, सही है सर। हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगर आपको कैप्स की कोचिंग चाहिए तो यस, ठीक। वो जो हमने नंबर दिया हुआ है ना, अभी हमने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर को बेसिकली आपने जो है क्या करना है, जो हमारा फॉर्म दिया हुआ है हमने यहाँ चैट बॉक्स में, इस फॉर्म को आप फिल कर दो, ठीक है। तो हमारी टीम आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगी। तो जो लोन की जो स्कीम है वो आपको बताएंगे, लोन के बारे में क्या, जो भी आपको कुछ भी डाउट रह गया है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैट बॉक्स में हमने ये फॉर्म डाला हुआ है, प्लीज इसको आप फिल करें। तो फिर ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके, ताकि वो आपके कुछ भी डाउट्स हैं, स्पेशली अगर कोई ये फीस वाला क्वेश्चन था, या आपको लोन वाला है, या कुछ भी एनीथिंग, आप कोई भी बाद में भी आप उनसे बात कर सकते हैं एनी टाइम, है ना। कोई आपको मुझसे तो बात नहीं हो पाई, पर आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो। तो आप इस फॉर्म को अगर फिल कर दोगे, जो हमने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, ये 2 मिनट लगेंगे इसमें। जैसे इस पे आपका नाम पता पूछा है, आपका फोन नंबर, और फिर आप उसको फिल कर दीजिए। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन से आप मुझसे नहीं पूछ पा रहे हो, उसको भी आप इस फॉर्म में फिल कर दें तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। Yes, So sir. there is a Thank you, question sir. in the chat box from NK that I am हाँ, तो pursuing वही my तो मैंने B बताया, Pharm. वो चैट बॉक्स अगर वो फिल कर देंगे तो जी. वो खुद ही बताएगा हमारी टीम। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए कि जो लोन कंपनी क्या है, तो वो हमारी कंपनी आपको, वो कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे हमारी टीम जो है आपको लोन के बारे में। उनका ही एनके का ही एक क्वेश्चन था। पहले उन्होंने पूछा था, आई एम परसुइंग माय बी फार्मेसी and I am in third year and already have completed diploma in pharmacy. So should I take experience or just start preparation for CAPS? Yeah, you can start preparation. You are eligible. So someone did diploma and you are studying as a lateral entry B form, so you are eligible to sit in the exam after you completed your degree and you're registered pharmacist. But since you are in mostly if you are in fourth year, so you can take classes. We are also going to start new batch basically for the student. Those are in year 3 and year 4. So they can enroll in this course. So once they finish their course, and immediately they can write the exam. So you can fill this form. Our team will give you the more information about this program as well. Yes, next please. सर, यस सर, करंटली जो आपकी फीस है वो पाकिस्तानी रुपीस में करंटली कितनी अरे यार, मैंने पाकिस्तानी में बताएंगे? भाई, ये इंडियन वाला का यहाँ इनको कहाँ बुला दिया पाकिस्तानी को, उसको वो वहां पर एक ही। तो व्हाट कैन आई डू इफ यू हैव फीस? अगर आप अफोर्ड नहीं तो मैं क्या करूं भाई? आप अगर आप अफोर्ड को तो ही आप आओ, जहाँ आपको जो भी सस्ता मिला वहां चले जाइए आप। इंडिया के अंदर सर, इंडिया $1,000 चार्ज करते हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग इन, पता है तेरे को कितनी सैलरी हो जाएगी? ये 3 करोड़ तुम्हारी सैलरी हो जाती है पाकिस्तानी रुपीज में, ये 1 साल की। तो वो करोड़ कहाँ रखोगे? घर में रखोगे या हमारे नहीं दोगे आप? आप बात चले जा रहे हो भाई, दिस इज योर प्रॉब्लम
कि आप फीस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लेक्चरर को $150 देने पड़ते हैं पर घंटे को सैलरी उसकी, जो लेक्चर आपको 200 घंटे पढ़ाता है। ये सर मैं कह रहा हूँ कंपनी है, दिस इज नॉट एस्टिमेशन ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, तो वी हैव फॉलो द ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस, ऑस्ट्रेलियन जो है द थिंग्स, यू नो, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ है टैक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स। Nasir, if you have any questions, you can discuss separately. You can fill in that form and then. From this institute, please ask your question. This is specifically for the institutions. So, students, you may ask your questions, please. और प्लीज फिल दिस फॉर्म, सो जो बाहर वाले हैं वो फॉर्म को फिल कर दें तो हमारी टीम खुद ही आपको कॉन्टेक्ट करेगी। So basically, I just wanted to know how much experience is needed for CAPS exam. एक्सपीरियंस? Yes, sir. As a pharmacist. एक्सपीरियंस नॉट नीडेड, 0 एक्सपीरियंस पे आप मार्गेशन कर सकते हो। ओके सर, एक्चुअली मैं 2018 में बी फार्मेसी करी थी, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी, तो मैं एलिजिबल हूँ। यस, अभी हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ना पहले उन्होंने किया और वो लाइक एमआरशिप कर रहा, कोई दूसरी जॉब कर रहा था और फिर उन्होंने एग्जाम पास। अभी दूसरे फील्ड में ही हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये कुछ। ये मैं वही कह रहा हूँ, अभी हमारा एक लड़का है अभी ये हरियाणा से, उसने पास किया तो उसको वीजा भी मिल गया है, वो जीएसके में हमारे पिछले 5 साल से। अच्छा, वो भी 2018 में ही पास आउट था। तो अगर आप दूसरी फील्ड में हैं, आप अगर फार्मेसी की फील्ड में नहीं है, फिर भी आप एग्जाम को लिख के, और एक लड़का और था हमारे पास जो है, इसका नाम वो है नवीन तिवारी, सॉरी नवीन जायसवाल, ये है एमपी का। ये लड़का भी एमआर है एमक्यूआर में और इसने भी पास किया एग्जाम। और ये तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दूसरी फील्ड में जॉब कर रहे हैं पर फार्मेसी की उनके पास डिग्री है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट नीडेड। Yes, if you have a 3-year work experience, then you will get a 5 additional point, like easier for you to migrate Australia. Okay, thank you, sir. Thank you. Yes, Lokesh. There is a question in the chat box, sir, from Mohammad Anish. B pharmacy fresher eligible for मैंने CAPS exam? वही तो बताया आपको कि आप फ्रेशर हैं, आप zero experience also you are eligible to sit in the CAPS exam. Experience की mandatory नहीं है। Hi sir, this is Lokesh. Basically, if you want to work in Australia, no need to have work experience. मगर आपको अगर न्यूजीलैंड में वर्क करना है, then you need 1 year work experience. Yes, Lokesh, again, please. Yeah, I am a bachelor, sir. Bachelor's in pharmacy I finished, and I also did my diploma, sir. My registration with the Pharmacy Council with the diploma only. I didn't do the bachelor's registration. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल चले जाओ, वो तुम्हारा कल ही कर देगा, वो काट के बी फार्मा लिख देगा। सेम रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका। No, here they are taking at least 6 to 8 months, you know. ये 10 मिनट का काम है बेसिकली। मैं खुद ही यूपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो मैंने खुद ही अपना कराया हुआ है। Yeah, mine is Andhra Pradesh Council, sir. I applied online, but still it is showing pending only status. Okay. But in this is just 5-minute work basically. They will just cut your degree diploma, they will add to B form. But this is not a big deal. They will just check internally, तो आपको अगर डिप्लोमा पे था तभी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। Okay, so no need to register for a B pharmacy also. I can apply now. Yes, you can apply now. They just want to check that you are a registered pharmacist and your degree is not fake. और आपकी फेक तो है नहीं। Okay. Yeah, that I will get the transcripts from the university. Yes, so basically they will check 2 things. First from your university, they will check your, for example, Mr. Lokesh, this roll number, this in that name, in this year he passed. So this candidate passed from your university. University say yes, this is our student, for example. Like Okay. Then next they will go for online check on the Andhra Pradesh Pharmacy Council registration. Okay. If your name is up here, is fine. If your name is not there, they will request to you. You have to go to your pharmacy and request them. Maybe then sometimes they need to update on their website. Okay. Clear, sir. Thank you. I will contact you, sir. Okay. Lokesh, if you can fill this form, so our team will contact you. Okay.
Oh, okay, sir. Thank you. So there is a question from NK. So, work from job. Sir, which field of pharmacy? Sir, you are on mute. Sorry. So basically, if you are working in the pharmacy, I mean, you know, मैं समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहे हो सर? Which field? ये अमीन ये बेसिकली स्टूडेंट आर म्यूट कर दे रहे हैं बार बार, तो उसको तो अगर आपने वो किया हुआ है फार्मेसी, तो ये मैं समझ में नहीं एन के तुम पूछ क्या रहे हो? Which field of pharmacy has work from job? NK, I request you to please unmute yourself. आप पूछ लो हिंदी में because we are not able to understand your questions. मोहम्मद अनीश, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन एंड कमेंस द प्रोसेस. तो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था अभी आपको कि डिग्री चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपका पासपोर्ट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यू नो, आपका जो है यही सब डॉक्यूमेंट चाहिए कोई, और रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपके. सर एनके सिंह की वर्क फ्रॉम होम जॉब लाइक फार्मासिस्ट की कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब होती नहीं बेसिकली. देयर इज नो जॉब फॉर फार्मासिस्ट work from home. Okay, so you have to work in retail pharmacy or hospital pharmacy or industrial pharmacy. You have to go there and work. But apart from this, there is some work, for example, content writing or medical writing, you know, those kind of jobs is there, but that is not very specific for pharmacists. That job can be done by anyone. कोई साइंस ग्रेजुएट भी होगा वो भी कर सकता है, डेंटिस्ट्री वाला भी कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है वो जॉब. कोई ऐसी फार्मासिस्ट की स्पेसिफिक जॉब नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. Akila is asking, sir, that's the 60 days of dispensing. As of now, nothing. You know, if the government is implemented, it is not yet implemented. Once they implement it, then maybe there is maybe some impact, but not as of now. There are hundreds of jobs. Last week, there was one Pakistani student, Ahmed, came to Australia, the exam, and he got job within 5 days in Australia. So now he's working. So if once you are in Australia, there is hundreds of jobs are available. Sir. And English you can write IELTS, PTE, TOEFL, PT, any test you can write. Yes, Nasir, again. Yes, सर पूछना ये था कि साल में 3 दफा टेस्ट लेती है ना फार्मेसी काउंसिल जो ऑस्ट्रेलिया के है सर, गैप्स एग्जाम. ऐसे ना सर. Yes. और मैक्सिमम इसमें बंदा अटेम्प्ट कितनी बार कर सकता है? लाइक कोई चांसेस हैं इसके, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी टेस्ट की लिमिट होती है कि एक दफा? नहीं, इसी कोई लिमिट नहीं होती. आप बेसिकली सुन तो रहे नहीं, मैंने क्या बताया था. मैं 3 बार ये बात बता दी कि न्यूजीलैंड के लिए है 2 अटेम्प्ट, ऑस्ट्रेलिया के लिए है अनलिमिटेड अटेम्प्ट. जितनी बार भी चाहो आप दे सकते हो, और हर बार आपको गवर्नमेंट की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी. यस सर. तो वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है फॉर ऑस्ट्रेलिया. Any other question? Mohammad Anish asked, I think he wanted to understand the IELTS. मैंने बता दिया था अभी कि वो IELTS दे सकते हैं या TOEFL जैसे PT दे सकते हैं. कोई भी एक इंग्लिश का टेस्ट मस्ट नीड टू पास. कोई भी एक एग्जाम दे सकते हैं आप, कोई भी, मगर PT सबसे इजी होता है और एज कम्पेयर टू IELTS. Is there any other question, guys? I mean, can we finish now? कोई questions नहीं है तो बच्चों को. Right, sir. Faculty member, do you have any questions?
जी सर, एक क्वेश्चन था। अगर हमारा कोई स्टूडेंट मान लीजिए रामस्वरूप का यहाँ इंडिया में है और वो अपनी फार्मेसी कंप्लीट करता है, फिर ये सोचता है कि मतलब उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है, और तो फिर क्या उसे ऑस्ट्रेलिया जा करके तैयारी करना होगा, फिर यहाँ से कोई नहीं, प्रोसेस यहीं है से या फिर हम ऐसा लोग सिस्टम ऑनलाइन है? कोचिंग कराते हैं। हमारे जी। पास जो हमारे बच्चे हैं सारे के सारे इंडिया में रह कर ही वो जो है इस एग्जाम को जो है पास कर सकते हैं। इंडिया में सेंटर, इंडिया में ही सेंटर है इसका। हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं कोचिंग, जी। और फिर ये इंडिया में ही पास करके फिर इंडिया से ही वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। सारे बच्चे यही करते हैं हमारे। तो अभी ये लास्ट वाले बैच में ये 19 मार्च को अभी हमारा एक वो हुआ था एग्जाम लास्ट वाला, तो उसमें 56 स्टूडेंट पास किए थे आउट ऑफ 60, और तो मैक्सिमम उसमें से वीजा मिल गया है। तो सारे बच्चे मैक्सिमम जो इंडिया में ही हैं। मोस्टली बच्चे थे आंध्र प्रदेश के, हैदराबाद के, और जो है उधर केरला के बहुत स्टूडेंट थे, हरियाणा पंजाब के बहुत स्टूडेंट थे हमारे पास। अभी थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है यूपी के अंदर, थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम है, तो ठीक। उसकी थोड़ा सा जानकारी नहीं है। तो सर एक क्वेश्चन था कि अगर कोई मान लीजिए कि ऑनलाइन आपसे ज्वाइन करता है, तो अबाउट कितना उसका जो है स्पेंड या खर्च आएगा? बेसिकली उसका पूरा खर्चा जो है ना, वो जहाँ आने तक 4-5 लाख ही आएगा। अच्छा। हाँ, ये बेसिकली जो ना, क्योंकि डॉलर जो वो होता है, वो होता है 55 रुपए का ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो सारी जो हम्म। फीस होती है गवर्नमेंट की वो सब डॉलर में होती है। वो तो हम्म। आप इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो वो 4 से 5 लाख हो जाते हैं टोटल, इंक्लूडिंग ये ना, इसमें हमारी एकेडमिकली की फीस जितना हम चार्ज करते हैं पढ़ाते हैं, और गवर्नमेंट की फीस, वीजा की है, सारा मिला के इतना हो जाता है वो। और अगर स्टूडेंट ओके। को जो है ये हमने फॉर्म दिया हुआ है फिल कर देंगे, तो हमारी टीम है उनको इंडिविजुअल बता देगी कि इस स्टेप में इतने लेंगे, इस स्टेप में लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। और हम लोग के पास बेसिकली लोन फैसिलिटी है, कोई भी इंडियन सिटीजन के लिए हम लोग लोन करा देते हैं, तो वो भी बच्चे कर सकते हैं। मतलब फिर 12 EMI तक वो लोग पे करके आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू जाहिद। यस, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? जी सर, ये जो आपने 4 to 5 लाख खर्चा बताया है, हाँ सर ये पीटी भी इसी में आप प्रिपरेशन करवाएंगे, सब हाँ चीज जी। इसी में आ जाएगी? नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम तो अपनी फीस चार्ज करेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट की यस फीस है सर। वो तो खुद खुद से पे करनी है। मगर गवर्नमेंट का और हमारा फीस मिला के इतने रुपए हो जाते हैं। सही मैंने है आपको एक रफ आइडिया बताया कि इतने लाख रुपए लग जाएंगे आपके। आपको गवर्नमेंट की फीस हमें नहीं देनी है, गवर्नमेंट को आपको खुद देनी है। स्किल असेसमेंट की होगी, फिर एग्जाम के टाइम पे होगी, पीटी की होगी, वीजा की होगी। तो बेसिकली ये 70% जो 60-70% जो आप पैसे पे कर रहे हो, बेसिकली आप गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हो। पूरे जो अमाउंट में आप पे करोगे, और उनको आप डायरेक्टली पे करोगे अपने जो आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उससे। यस, बेसिकली जब आप इंटर्नशिप करने आते हैं तो इंटर्नशिप में आपको लर्निंग होती है, आपको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में लॉ क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे पेशेंट से बात करते हैं, है ना, कैसे आप यहाँ पे डिस्पेंसिंग होती है, कैसे क्या चीज होती है, वो सारी चीजें आपको वो करनी होती है। इंटर्नशिप का मतलब है कि आपको एक सीनियर फार्मासिस्ट के अंडर में आप जॉब करेंगे, वो पैसे आपको मिलते रहेंगे, 2-3 लाख पर मंथ जो भी मिलेंगे, और आप जॉब करते रहेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि 70% जब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, जो भी आपने लर्न किया है इंटर्नशिप के दौरान, फिर उसका एक एग्जाम होता है। तो उस एग्जाम की भी एकेडमिकली कोचिंग कराता है। तो एकेडमिकली का प्रॉमिस है, अंटिल यू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। Okay, sir, I think we finished the session. यस यस, नाइस सर, No ठीक है, थैंक यू question. सो मच। Okay, sir. It is ठीक an है, honor to have थैंक यू, थैंक यू। yes, honor to have opportunity to express my appreciation to all the dignitaries present. I am grateful to the esteemed delegates of the webinar for their presence and effort in making this event a successful. I extend my
sincere thanks to our honored chief guest, Mr. Akram sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Okay, thank you, bye. sir. Bye bye. Thank you, Zaid sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.